Hi everyone, it's me, your Manu Ishu, and welcome back to my YouTube channel, Manu Isu ACCA classes. So, in this video, I'm going to explain the question related to the standard IAS-41, which means agriculture, and IAS-2, that means inventories. So, this question is from the Kaplan kit of F7. So watch the video till end, and if you like the video, please hit the like button. In case you're watching my video for the first time, then don't forget to subscribe my channel and share it among your friends so that they could also have a benefit. Okay, so the question start from the 69. Okay, 69. Which two of the following statement regarding the Bounty Company inventories are true? Okay, so it means out of these six options we have to select the two. Okay, so what's the question scenario is Bhavani Company manufactures cycling equipment. It has a number of specialized frame in inventory which cost 20,000 to manufacture. So means basically company have a number of specialized frame which cost 20,000. This frame were manufactured following an order from a customer at an agreed selling price of 30,000, means cost is 20,000 and selling price is 30,000. Due to recent technological advances, the current cost of manufacturing such frame is estimated to be 15,000. Bounty Company also has inventory of 3,000 pedals with a cost of 20 each. These have become damaged. If Bounty Company spends 5,000 to repair all of them, this could be sold for 21 each. Okay, so basically, in this scenario, they are talking about the two product or inventory. We can say one is the specialized frame, and other one is the pedal. Okay, so it means we have to find at what value these two inventory will be valued. So as per IAS2, we all know that inventory is value at the lower of the cost or NRV. Okay, so if we talk about the frames, what is the cost is 20,000, right? And selling price, nrv means selling price minus cost that will incur to sell those goods, we can say. But here in this question there is no indication about any selling cost to be incurred, so it means nrv is equal to selling price, which is 30,000. Okay. Okay. Okay, so out of these two, which one is lower? Cost is lower, so frame will be carried at a amount 20,000. Okay, so you might be wondering what about those what where was it? Okay, so what about this 15,000? So due to recent technological advances which was beyond our control, so it is not relevant. So it is not relevant for here. uh, Remember one thing you might find in the textbook: raw materials are not written down below cost. Why so? If the finished good they will form a part will be sold at a profit. Okay, so raw material are not written down below cost. If the finished good they will form a part will be sold at a profit. Therefore this frame which will be used in manufacturing cycling equipment, it will be carried at 20,000. We will not reduce this amount to 15,000. Okay, so 15,000 is not relevant. ठीक है, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा साइकिलिंग वो प्रॉफिटेबल में सोल्ड होगा. सो हम लोग रॉ मटेरियल को कभी भी रिटर्न डाउन नहीं करते हैं बिलो कॉस्ट. ये चीज़ याद रखना है. सो फॉर फ्रेम द कॉस्ट इज 20,000. इट मीन्स ऑप्शन बी. एंड व्हाट अबाउट द पेडल्स? Okay, so pedal cost 20 each, and there are 3,000 pedals. So 3,000 into 20, it means 60,000. This is the cost of the pedals. But these have become damaged, and on which the company have to spend 5,000 to repair all of them.
and then after they could be sold for 21 each. So selling price is 21 into 3000, and selling cost incurred means repair cost, that is 5000. Okay, so 58,000. So out of these two, which one is lower? Obviously NRV in case of pedal, right? So it means pedal should be value at 58,000. Okay. Okay, so next question. To which of the following item does IAS-41 agriculture apply? So basically IAS-41 is applied to our biological assets, agricultural produce, right? So let's look out the option 1. Change in fair value of herd of animal relating to the unit price of the animals. Change in the value of herd animals. Okay. Log held in a wood yard. Log held in the wood yard. Farmland which is used for growing vegetables. Cost of developing a new type of crop seed which is resistant to tropical disease. Okay. So out of these four options, just think about the second one first. Log held in the wood yard means वो लकड़ी काट कर, मतलब लंबे लंबे लकड़ियाँ होती है ना, मतलब पेड़ से काट के रखते हैं. सो ये मतलब IS-2 में काउंट होगा. एट अ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट से IAS-41 एप्लीकेबल था, बट आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS-2 एप्लीकेबल होगा. सो 2 तो नहीं होगा. सो 2 नहीं हुआ तो हमारा ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया एंड ये ऑप्शन भी गया. सो बच गया 1. सो 1 इज आवर करेक्ट आंसर. अब 3 देखते हैं. फार्म लैंड विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स. सो बेसिकली जो लैंड होते हैं जिसपे वेजिटेबल ग्रो होते हैं उस पर IAS-16 लगता है. Cost of developing a new type of crop seed which is resistant to tropical diseases. I think इस पे IAS-38 intangible assets, नहीं tangible asset ही होगा I think. Cost of developing a new type of crop seed. नहीं, प्रोडक्ट में भी तो काउंट ही होता है ना, तो आई थिंक वो एप्लीकेबल होगा rather than the IAS-41. ओके. हाँ, इस पे IAS-38 ही एप्लीकेबल होगा. इंटेंजिबल एसेट, ये आपका डेवलपमेंट कॉस्ट हुआ, मुझे लगा ही था. ओके, 71 क्या क्वेश्चन है. Which three of the expenses below are allowable by IAS-2 as an expense that should be included in the cost of finished goods inventory? Okay, so what are those costs that should be included in the inventory? So first one is purchase cost. Purchase cost include our purchase price plus import duties in case of any irrecoverable sales tax, and less any discount or rebates, transport and handling cost. ये सब हमारा in summary whatever the cost which is directly attributable वो सारे include करेंगे. उसके बाद conversion cost means all the direct cost of conversion means material, labor, expenses. In case of the overhead, proportion of fixed and variable production overhead, and जो fixed over production overhead होगा that should be allocated based on the normal level of activity, or whatever the abnormal wastage, storage cost, administration cost that will not be included in the inventory valuation, वो हमारा expense as expense show करेंगे P&L में whenever they are incurred. ठीक है. और लेट्स लुक आउट द ऑप्शन गिवन, कौन कौन सा इंक्लूड होगा एंड कौन कौन सा नहीं. द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड. ऑब्वियसली नहीं, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में शो हो जाएगा हमारा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा. सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन रेट, ऑब्वियसली ये इंक्लूड होगा, मैंने बोला. जनरल मैनेजमेंट ओवरहेड नहीं, ये इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग. और हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड भी करेंगे, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी. फैक्ट्री मैनेजमेंट ओवरहेड एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सो डी भी करेंगे. कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक और मैंने क्या बोला था, एंड हैंडलिंग कॉस्ट, सो ये हमारा इंक्लूड होगा. एबनॉर्मल इंक्रीजेज इन द ओवरहेड चार्जेस
caused by unusual low production level due to the exceptional hot weather. So whatever the abnormal waste is, our storage cost, administration cost, selling cost, ये सारे exclude होंगे. It will be charged as expense in the period whenever they are incurred. ठीक है. What should be the total value of these two items of inventory in the statement of financial position? Okay. Naveli has only two items of inventory on the hand at its reporting date. Okay, item 1. Material costing 24,000 bought for processing and assembling for a customer under a one-off order which is expected to be produce a high profit margin. Since buying this material, the cost price has fallen to 20,000. मैंने उस टाइम भी बोला कि हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दैट शुड नॉट बी रिटन डाउन बिलो द कॉस्ट इफ़ वो प्रोडक्ट को हम लोग प्रॉफिटेबल में सोल्ड करने वाले हैं तो. सो दैट्स वो यहाँ पे 24,000 एज इट इज़ होगा. सो क्वेश्चन नंबर आपका 24,000 होगा. देन फॉर आइटम 2, a machine constructed for another customer for a contract price of 36,000. ओके मतलब 36,000 में सोल्ड करेंगे कस्टमर को, ये बात बोल रहा है. वो उस कस्टमर के लिए कंस्ट्रक्ट हो रहा है. एंड दिस हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 33,600. मतलब कॉस्ट लगा 33,600. इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट in order to meet a certain healthy and safety regulation, modification at an extra cost of 8,400 will be required, and the customer has agreed to meet half of the extra cost. ओके सो जो हमारा कॉस्ट है आइटम 2. सो आइटम 2 के केस में हमारा व्हाट इज आवर कॉस्ट? द कॉस्ट इज आवर 33,600. एनआरबी निकालते हैं. एनआरबी आपका होगा सेलिंग प्राइस इज 36,000 एंड द कॉस्ट टू सेल मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कस्टमर बियर कर रही है 4,200. सो इनमें से लोअर कौन सा है? एनआरवी. सो एनआरवी वैल्यू होगा. सो इट मीन्स हमारा कितने में रिकॉग्नाइज करेंगे इन्वेंट्री का वैल्यू इन एसओपी? एडिंग दिस टू वी विल गेट 55,800. ओके so moving to the next question 73. At what cost should Mario value this inventory in his financial statement? Okay so question number is this 73. ओके सो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन करके बताती हूँ कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा कौन कौन सा नहीं. रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली वी विल इंक्लूड 1.50. इम्पोर्ट ड्यूटीज भी आएगा, मैंने उस टाइम बोला. डायरेक्ट लेबर भी आएगा 0.50. सब कॉन्ट्रैक्टेड लेबर कॉस्ट भी आएगा 0.80. रिकवरेबल सेल्स टैक्स नहीं आएगा. इफ इट इज इरिकवरेबल इन दैट केस वी विल इंक्लूड, अदरवाइज नॉट. स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं आएगा. प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 0.25. सो 3.45. ठीक है. और ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, मैंने पहले ही बोला हुआ था. Okay, so 74 number question. At what value will the closing inventory of Fraser be reported in its SOFP as at 30 September 20x4? On 30 September 20x4, Fraser closing inventory was counted and value at its cost of 1 million. So what was the cost? $1 million. This included some item of inventory which had a cost of 210,000. Means इसमें कुछ inventory है that's having a cost of 210,000. यहाँ पे 30 comma ले लेती तो. So less 210,000 we will get
had been damaged in the flood on 50 September 20x4. सो ये डैमेज हो गया था इसलिए मैंने घटा दिया damaged. These are not expected to achieve their normal selling price, which is calculated to achieve a gross profit margin of 30%. सो बेसिकली ये हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है हमारा 210,000 डैमेज गुड्स का. ये डैमेज गुड्स का है, डैमेज गुड्स कॉस्ट. जो डैमेज इन्वेंट्री है उसका कॉस्ट 210,000 है एंड वी डू हैव गिवन ए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%. इट मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, ये कॉस्ट है, दिस वन इज 70%, so we will divide by 70 and multiply it by 100. So it means एक second. Okay, so it means our selling price is 300. ये 3 जीरो कॉमन है यहाँ पे भी. ओके, अब क्या कहता है, the sale of these goods will be handled by an agent who will sell them 80% of the selling price and charges a razor a commission of 25%. so out of these, इसमें से 80% कितना हुआ, 300 का 80% 240 हुआ. इसमें से कमीशन भी ले रहे हैं, कमीशन भी माइनस करेंगे, तो कमीशन माइनस कितना परसेंट ले रहा है वो 25%. सो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 75. सो इट मीन्स 180 में सेल कर रहा है. व्हाट अबाउट द कॉस्ट, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. तो 60 कमीशन चार्ज कर रहा है. सो एनआरवी क्या हो जाएगा, एनआरवी विल बी दिस माइनस दिस 180,000. सो 210 का जो कॉस्ट था, कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर कौन सा है, 180,000 है ना. सो डिफरेंस जो जितना का आ रहा है उसको एक्सपेंस में चार्ज करना होगा ना. या फिर ऐसे कर सकते हो, रुको, आप ऐसे भी कर सकते हो. सो रिमेनिंग का था 790 एंड जो डैमेज गुड्स का कॉस्ट है 210, एनआरवी इज 180. सो लोअर कौन सा है 180, सो ऐड द 180 हियर. सो 970, मैंने 3 जीरो कॉमन लिया है, सो 970,000. ओके, identify whether the following items should be accounted for under IAS-41 agriculture or not. ये तो बुक में है, you can do it. Okay, 76. What is the correct accounting treatment for the cattle at 31st December 20x4 according to IAS-41 agriculture? Magna on cattle recorded in the financial statement at 10,500 on 1st January 20x4. At 31st December 20x4, the cattle have a fair value of 13,000. If the Magna sold the cattle, commission of 2% would be payable. ओके, सो IAS-41 के केस में हम लोग जो एसेट होते हैं उसको हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो होता है उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर इज, सो पहले उसने कितना में रिकॉग्नाइज किया था, पहले नहीं, फर्स्ट 10,500, ठीक है, और 31st दिसंबर 20x4 में
फेयर वैल्यू इज 13,000, जिसमें से कमीशन 2% इज पेएबल। सो इसको घटाने के बाद वी विल हैव इतना। सो कितना का गेन हुआ? सो 2240, 2240। सो एक ही ऑप्शन जहाँ पे गेन दिख रहा है 2240 का। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो लीज का वीडियो आई थिंक मैंने बना दिया था, जस्ट गो एंड हैव ए लुक ऑन माई प्ले लिस्ट of F7. So okay, this much for today. Thank you so much for watching my video. If you like, please share it among your friends and have a good day.